हेलो माय लविंग फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्प स्टडी। आपके तो एग्ज़ाम आ ही गई, तो कंप्लीट बोटनी पार्ट 1 जल्दी देख लो। ध्यान से देखना, वीडियो एंड तक देखना और डोंट मिस दिस वीडियो, क्योंकि इसमें बहुत सारा बोटनी एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। Botany, Section A. Question number 1. The vegetative propagule found in water hyacinth is right option is B. Out of option A tuber, option B offset, option C bulb and D sucker. Okay. Number 2. Sweet potato and potato is an example of option A homologous organs, option B divergent evolution, option C analogous organs, option D natural selection. Which one is the right option? C analogous organs. Given below are two statements. Read the statements carefully and choose the correct option. Statement 1. RNAi takes place in all prokaryotic organisms. Statement 2. RNAi method involves the silencing of a specific mRNA due to a complementary dsRNA that binds to and prevents translation of the mRNA. Which one is the right option? Option D. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. This is the right option. ध्यान से देखना, ठीक है। ये सारे बोटनी का क्वेश्चन, सारे बोटनी का एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दी मैंने। ओके, ये ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of interaction can be observed between fig and wasp species? Option A commensalism, option B amensalism, option C competition, option D mutualism. The right option is option D mutualism. Next question, bryophyllum can propagate by option A nodes in stems, B eye buds in stem, C rhizome, D leaf buds. The right option is the D leaf buds. Match list 1 with list 2. List 1, list 2. A chrysophytes, B deuteromycetes, C dinoflagellates, D ascomycetes. इधर क्या है? मोनोलेक्स, सैक फंगी, ट्राइकोडर्मा, डिजमिट्स। B3 देखो, द राइट ऑप्शन इज सी A4 मैंने कर दी। ओके, देख लेना। A4, B3, C1, D2, प्रिंटिंग मिस्टेक था, D2। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two red plants are crossed, 60 red and 20 colorless plants are obtained. The genotype of parent plant is A capital C cross capital C, B capital C cross small c, C capital C small c cross capital C small c, D
capital C cross capital C small c. Which one is the right option? C. C the right option. दोनों ही हाइब्रिड है. ओके, दोनों ही हाइब्रिड है. दोनों हाइब्रिड पेरेंट में क्रॉसिंग होने के बाद 60 रेड एंड 20 कलरलेस plants are obtained. Which of the following statement is correct? A. Conidia is asexual reproductive structures present in sponge. B. Coconut and date palm is an example of monoecious plant. C. Lifespan of parrot is 100 years. D. In Bryophyllum, adventitious bars arise from the notches present at margins of leaves. So, this is the right option. In Bryophyllum, adventitious bars arise from the notches present at margins of leaves. Okay, next question चले आओ. Pyramid of biomass in a lake ecosystem having small standing crop of phytoplankton that supports large standing crop of zooplankton will be A. Inverted, B. Upright, C. Spindle shaped, D. None of these. A. Inverted, उल्टा हुआ है, मतलब ऐसा है, उल्टा हुआ पिरामिड दिखता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a recessive character in P according to Mendel? A. Violet flower. B. Inflated pod. C. Yellow pod. D. Yellow seed. The right option is C. Yellow pod. नेक्स्ट चले आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाए हम. Which of the following formed during photorespiration? A. Sugar. B. NADPH. C. ATP. D. Phosphoglycolate. The right option is D. Phosphoglycolate. Which of the following is not included in the evil quartet? A. Overexploitation. B. Competition. C. Alien species invasion. D. Co-extinction. The right option is B. Competition. Next question. Read the given statements and choose the correct option. Statement 1. RNA polymerase 2 transcribes precursor of mRNA, hnRNA. Statement 2. hnRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. कैपिंग एंड टेलिंग के लिए जो प्रोसेसिंग चलता है वो कौन सा प्रोसेसिंग, कौन सा राइट ऑप्शन? ए. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. बी. बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. सी. स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. The right option both statement 1 and 2 are correct. दोनों ही करेक्ट है. नेक्स्ट चले आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1. द रेस्पिरेटरी पाथवे इज कंसिडर्ड एज एन एम्फीबोलिक पाथवे. स्टेटमेंट 2. रेस्पिरेटरी पाथवे इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ anabolism and catabolism. The right option A. Both statement 1 and 2 are correct. B. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. The right option A. दोनों ही करेक्ट है. और बाकी है बोटानी का क्वेश्चन. सारे बोटानी का क्वेश्चन मैं दे दूंगी और कुछ बाकी है. और दूसरे जो बुक है क्वेश्चन का बुक है 38 ईयर्स का क्वेश्चन है. उसमें 38 ईयर्स का क्वेश्चन है.
आपको सॉल्व करा दूंगी एग्ज़ाम के लिए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट 38 ईयर्स क्वेश्चन है इसमें, ये भी आप पढ़ लेना। I hope this video is helpful for you. Subscribe my channel Help Study and like, comment and share this video. If you have any questions, so comment me. I will reply you. Don't worry for the exam. मेरे साथ रहो, कोई चिंता नहीं रहेगा। ओके, बिल्कुल टेंशन मत करो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।